See the thermal power station, यही thermal power plant. You will observe that there are the two types of tower there. What are they? If you observe the schematic of the thermal power station in the figure 5.7, you will get the answer of this question. अभी बताया आपको मैंने, एक तो stack है and second है cooling tower. Compare the schematic of the thermal power station with the block diagram above and you will understand how the boiler, turbine, generator and condenser are arranged in the power station. ठीक है. Next, after combustion of fuel, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. देखिए पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, इस तरह से ये प्रोसेस पूरा चलता है. ओके. नाउ आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल, हियर कोल इन द बॉयलर, द इमिटेड गैस आर रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द वेरी हाई टावर. देखिए यहाँ पे ये जो है, ये स्टैक जो है, ठीक है, यहाँ से गैस रिलीज की जाती है जो कंबशन होता है कोल को जलाने के बाद. ठीक है, जो कोल में से धुआं निकलता है तो उसको यहाँ से स्टैक में से रिलीज किया जाता है. Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and pressure, the steam temperature and pressure decreases. एक बार steam, देखिए steam क्या करता है, टर्बाइन को रोटेट कराना है, बस उसका काम यही है. But steam, when the steam is capable to rotate the turbine when it has a high pressure and temperature. Once the high pressure and temperature is used on the turbine, the steam becomes जो पावर होता है steam का वो decrease हो जाता है. Steam temperature and pressure decreases. This steam is converted back to the water by taking out the heat from that is by cooling it. अब उसके बाद क्या होता है कि the steam again get converted back into the water. Okay, in this cooling tower you can see. Okay, this is a process where the steam get converted back into the water and this water again sent to the boiler with the help of pump and then the process again start taking place. And this goes on. This is done in the condenser using the water in the cooling tower. Condenser की मदद से उसको कंडेंस किया जाता है. The water in the cooling tower is circulated through the condenser. The heat energy in the steam is given to the water and the steam condenses back to the water. So the heat observed by the water is then released to the atmosphere through the vapor and heated air through the cooling tower. Although the thermal power generation is a major way of electricity generation today, it suffers from the certain problems. देखिए, there are the major way today what we are getting the electricity is because of this process only, because of this plant only, that is thermal power plant station. Okay, but there is a problem regarding this thermal power plant. Okay, while generating the electricity. And what is the problem of generating the electricity during the thermal because of this thermal power plant? Let us see now. देखिए problems क्या क्या होती है. First problem is air pollution. Now let us see the problem. First one, air pollution due to the burning of coal. See, there are a lot of pollution take place when the coal is burned. कोयले जब जलता है कोयला तो बहुत सारा pollution होता है. Burning of coal result in the emission of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, which are harmful to the health. These are the chemical gases which are released and which are harmful to the health. First problem. Second, along with the emission of the gases due to the burning of coal, soot particles. Okay, जो डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जैसे ऐश या राख जो होता है वो भी एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, आर ऑल्सो रिलीज इन द एनवायरमेंट. दिस में कॉज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और जो ये सूट पार्टिकल्स होते हैं व्हेन द ह्यूमन व्हेन द ह्यूमन रिस्पायर, ओके, तो वो सूट पार्टिकल्स बॉडी के अंदर चला जाता है और लंग्स में जमा हो जाता है एंड दिस कैन कॉज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज एज हार्मफुल एज if the person is doing the smoking. Okay, one person who is doing smoking, it can cause a respiratory system disorder. Similarly, because of this also same disease can be take place. Okay, disorder can be take place, so it is also very dangerous. Third, the reserves of the fuel used in this method, that is coal, are limited. Therefore in future there will be a limitation on the availability of the coal. देखिए future में the availability of the coal will be not as much. ठीक है, जो कोयले की खदान होती है, जो माइंस होते हैं कोल के, they are not very much. Okay, and because of that there is a limitation on using of the coal today. So tomorrow if the coal will be not available for to us, so how the electricity is generated? What will be the alternate method to generate the electricity? We should try to find out that and we should be ready for that, so that the
electric energy can be generated tomorrow if there is no coal availability is there. Now, do you know some major thermal power plants in India and their capacity? They are given some major thermal power plant are there in India. What are the places are there? First, Vindhya Nagar. It is in the state Madhya Pradesh. Capacity to generate the electricity, that is 4760 megawatt. Okay, MW means megawatt. Mundra, Gujarat, 4620 megawatt. Mundra, again Gujarat, that is 4000 megawatt. Tamnar, Chhattisgarh, 3400 megawatt. Chandrapur, Maharashtra, 3340 megawatt. Okay, these are the major thermal plant which are there, which generate this much capacity of electricity. Now, so what are the second method? Okay, if the coal is not available, so we have the second method also. Okay, so let's understand the second method, that is power plant based on nuclear energy. With the help of nuclear energy, electric energy can be produced. Let us understand. In the power plant based on nuclear energy also, steam turbine is used to rotate the generator. In this nuclear power plant also, steam is used to rotate with the help of used to rotate the generator. Steam, यहाँ पे भी जो steam होता है वो टर्बाइन को रोटेट करने में मदद करता है और टर्बाइन की वजह से जनरेटर रोटेट होता है. However, here the energy released by the fission of nuclei of atom like uranium or plutonium is used to generate the steam of high pressure, high temperature and high pressure. Now here, how does the turbine rotate? और before that also, how does the steam is generated? क्योंकि steam होगा तो turbine rotate होगा, अगर turbine rotate होगा तो electric generator rotate होगा, generator rotate होगा तो electric energy produced होगा. So how does the steam is produced here? Steam is generated with the fission of the nuclei. Fission का मतलब होता है break. Fusion का मतलब होता है joint. If two atoms fused and they form one atom, that is combination. Combine होके दो atom एक atom बनता है, fused होके. This is a fission. Fission का मतलब होता है break होना. Now here what happened? There is a energy is released by fission of nuclei of atom like uranium or plutonium. These atoms are very heavy basically, uranium and plutonium. Their weight is overweight we can say. Okay, and they can be broken very easily. Okay, so they are once they are broken they become unstable. So energy is released and lots of small neutrons are released. How they break? Okay, that we'll see in further in the chapter. This is used to generate the steam. Once they break, जब ये uranium और plutonium टूटते हैं, break होते हैं, so energy is released and that is used to generate the steam. And the steam which is generated out of this, that is of high pressure and high temperature. The energy in the steam rotate the turbine. Once the energy is obtained by the steam, okay, energy steam बनता है energy की मदद से और steam की मदद से turbine rotate होते हैं, which in turn drive the generator, जिसकी मदद से generator चलते हैं and generator की मदद से electricity produce होता है. The flow chart of the nuclear power plant is shown in the figure 5.8. इसकी मदद से आपको और clear हो जाएगा. Now here you can see this nuclear reactor for nuclear fission. Okay, here what happened? We are using the fuel like uranium or plutonium. When they break, okay, energy is released. Okay, and the steam is system for the steam generation from water. Okay, then the steam is generated. Okay, from the water. बिकॉज वाटर को बॉईल करने की जरूरत है और वाटर को बॉईल करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है. वो हीट कहाँ से आ रहा है आपको? यहाँ से आ रहा है. व्हेन द एनर्जी इज रिलीज तो हीट इज प्रोड्यूस्ड देन वाटर इज बॉइल्ड एंड व्हेन वाटर इज बॉइल्ड देन द स्टीम इज प्रोड्यूस्ड. ओके, एंड दिस स्टीम यूज्ड टू ड्राइव द टर्बाइन एंड दिस टर्बाइन यूज्ड टू ड्राइव द जनरेटर एंड दिस जनरेटर गेट यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एनर्जी. दिस टर्बाइन जो स्टीम होता है, जो टर्बाइन को घुमाने के बाद वो स्टीम के पास जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है एंड दैट स्टीम अगेन गेट कन्वर्टेड बैक टू द वाटर. ओके, एंड फ्रॉम वाटर अगेन दैट स्टीम गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम स्टीम दे गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड फ्रॉम वाटर अगेन बैक कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ठीक है, और इसकी मदद यहाँ पे कौन करता है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में दिस टू एटम दैट इज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं टूटने पे, फिशन होने पे, और इसके वजह से
वाटर बॉयल होना चालू हो जाता है, एंड वाटर बॉयल होता है तो आपको पता है देन स्टीम इज जनरेटेड एंड देन द रेस्ट प्रोसेस कंटिन्यूज। Thus here the nuclear energy is converted into thermal energy. यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। थर्मल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम। थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। वंस यू ऑब्टेन द हीट एनर्जी then the water will start boiling and then it converted into steam. Once the steam is formed, kinetic energy of steam then converted into kinetic energy of turbine. Then it will rotate the turbine, and once the turbine will rotate, the generator will start rotating, and because of that finally the electric energy is produced. And finally the kinetic energy of turbine is converted into electrical energy. The step by step transformation of energy is shown in the figure 5.5. आप देख सकते हैं ये जो स्टेप्स है, ठीक है, इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी दैट गेट कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की मदद से वो स्टीम बनता है, ओके, वाटर से स्टीम, एंड फ्रॉम दैट स्टीम दैट इज यूज्ड टू ड्राइव द टर्बाइन, एंड द टर्बाइन की मदद से इलेक्ट्रिक जनरेटर ड्राइव होता है और इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। हाउ डज द न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस? जनरली न्यूक्लियर फिशन होता कैसे है? देखिए, जब न्यूक्लियर फिशन होता है, जब न्यूक्लियर का ब्रेक होता है, ओके, जब न्यूक्लियर टूटता है, ओके, न्यूक्लियर फिशन होता है कोई भी एटम का, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ओके, सो बेसिकली इट हैपेंस इन दिस वे। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में जो दिया है आपको, इस तरह से न्यूक्लियर फिशन होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियर फिशन होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूक्लियर एटम होते हैं, जैसे यूरेनियम होता है, यहाँ पे लिखा है, वो ब्रेक होते हैं, तीन तीन न्यूट्रॉन्स डेवलप होते हैं, तीन न्यूट्रॉन्स, फिर एक ब्रोम Br और एक Kr। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। When a neutron is bombarded on atom of uranium, देखिए मैंने पहले ही बताया था, यूरेनियम एंड ये जो यूरेनियम एंड सेकेंड है आपका प्लूटोनियम, दे आर ओवरवेटेड। इवन वन न्यूट्रॉन इज bombarded on it, okay, it will break, it becomes unstable. When a neutron is bombarded on an atom of uranium 235 atomic mass number है यूरेनियम का, it observe the neutron and convert into the isotopes। ये यूरेनियम को ऑब्जर्व करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं आइसोटॉप्स में। यू नो आइसोटॉप, व्हाट इज आइसोटॉप? यूरेनियम 236 बन जाता है। यूरेनियम 236 is being extremely unstable, convert into atom of barium and krypton through a process of fission releasing 3 neutrons। देखिए, जब यूरेनियम बॉम्बर्ड होता है तो तीन चीजें बनती है। पहला बेरियम बनता है, सेकेंड क्रिप्टॉन बनता है, एंड 3 न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है, और 200 MeV एनर्जी रिलीज होता है। इतना एनर्जी रिलीज होता है। फिर से बता रहा हूँ, एक बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है दूसरा, एंड तीसरा है 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है। इसके अलावा 200 MeV एनर्जी रिलीज होता है। दिस 3 न्यूट्रॉन जो बने हुए हैं वो आगे जाके दूसरे यूरेनियम से रिएक्ट करते हैं, ओके। इन दिस प्रोसेस कॉज द फिशन ऑफ 3 अदर यूरेनियम 235 एटम रिलीजिंग मोर एनर्जी। वो आगे जाके दूसरे यूरेनियम को अटैक करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक यूरेनियम जब बॉम्बर्ड होता है, ठीक है, तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड न्यूट्रॉन, और दो एटम बनते हैं, Br एंड Kr, ओके, यू नो दिस, Br एंड Kr, दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से दूसरे यूरेनियम पे अटैक करते हैं, दूसरे 3 यूरेनियम पे अटैक करते हैं। ये यूरेनियम पे अटैक किया तो वहां पे फिर से 3 न्यूट्रॉन बने, फिर से बेरियम एंड क्रिप्टॉन बनता है और 200 MeV एनर्जी रिलीज करता है। वैसे ये वाला पिक्चर है, वैसे ये वाला है, ठीक है। सो दिस कंटिन्यूसली गोज ऑन। इसको रोकने के तरीके भी होते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग अभी आपको वो सिलेबस में नहीं है कि किस तरह से ये प्रोसेस को रोका जाए, ओके। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस, दिस इज हाउ द न्यूक्लियर फिशन एक चेन रिएक्शन बन जाता है। इसके लिए ये न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ चेन रिएक्शन। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे कुंदन कुलम, दिस कम्स इन तमिलनाडु, आप लिख सकते हैं इसको, तमिलनाडु स्टेट में आता है, और 2000 MeV एनर्जी रिलीज करता है। इनकी कैपेसिटी कितना है? 2000 MeV एनर्जी। तारापुर कम्स इन महाराष्ट्र, 1400 1400। रवता भाटा, दैट इज इन राजस्थान, 1180 कैपेसिटी है इनकी। काइगा, दैट इज कर्नाटका में आता है, 880
MeV एनर्जी कैपेसिटी है. ओके, सो दिस इज हाउ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर्क्स. यहाँ पे देखिए स्कीमेटिक डायग्राम दिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, किस तरह से वो काम करता है. यहाँ पे ये एक बॉयलर है, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है. अब इसमें क्या होता है, बॉयलर इधर है, ओके, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है. यहाँ पे पॉट्स दिए गए हैं. अब यहाँ पे यूरेनियम या तो प्लूटोनियम होता है, उसको न्यूट्रॉन की मदद से बम्बार्ड किया जाता है, एक्टिव किया जाता है, ठीक है, ताकि वो एनर्जी रिलीज करे. ठीक है, वंस द एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, सो दे वाटर जो होता है बॉयलर में एनर्जी रिलीज हो जाता है, तो ये एनर्जी यहाँ पे बॉयलर में आता है. ठीक है, और वो एनर्जी की मदद से बॉयलर में जो वाटर होता है वो हीट होना चालू हो जाता है. तो वाटर जब हीट होता है सो दे स्टार्ट बिकम्स द स्टीम. ओके, एंड दैट स्टीम हेल्प टू, जो स्टीम उससे जनरेट होता है उसके प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दैट इट रिएक्ट्स ऑन द, इट फॉल्स ऑन द टर्बाइन. जब वो टर्बाइन पे गिरता है तो ये टर्बाइन रोटेट होना चालू हो जाता है. एक बार स्टीम ने टर्बाइन को रोटेट कर लिया तो स्टीम का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. तो फिर वो स्टीम फिर से कूलिंग टावर में चला जाता है. ठीक है, कूलिंग टावर में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फ्रॉम दैट अगेंस्ट द वाटर इज सप्लाई टू द बॉयलर. ओके, फिर से वो जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टावर, और ये पंप की मदद से वो बॉयलर में आ जाता है वो पानी. ठीक है, स्टीम से जो स्टीम से पानी बन जाता है, वो पानी जो है वो वाटर जो है वो बॉयलर में आ जाता है. ओके, इट कन्वर्टेड फ्रॉम द स्टीम द वाटर वी गेट, and that water come back to the boiler, okay, with the help of pump, and again that water get heated, and again it convert into steam, and again it will rotate the turbine, and again the electric energy will generate. Okay, turbine की मदद से generator rotate होता है, and because of that the electricity is generated, and so on this process goes on. A nuclear power plant does not use the fossil fuel like coal. In this we are not using coal. कोयले का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे जो यूरेनियम या प्लूटोनियम है उनका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं. Therefore, problems like air pollution do not arise. Also, if sufficient nuclear fuel is available, this can be a good source of electric energy. अगर हमारे पास ज़्यादा यूरेनियम या प्लूटोनियम की अवेलेबिलिटी है, so we can use this on the large scale. However, there may be a few problems associated with the nuclear power generation. इससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? Yes, there are some problems. What are the problems? First, the products after fission of nuclear fuels are also radioactive and emit the harmful radiation. See, now what happened in this case when the nuclear reaction take place, okay, due to the uranium और plutonium, तो जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उनके, ठीक है, जब वो टूटता है, वो ब्रेक होता है, ठीक है, तो जब उनके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो बाय प्रोडक्ट में से भी रेडिएशन या हार्मफुल रेडिएशन या वो उसे भी रेडियोएक्टिव मटेरियल ही बोलते हैं, और उसमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं. ओके, दैट कैन बी डेंजरस फॉर अस. दिस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर वेस्ट. ऐसे वेस्ट को हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं. हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट. व्हाट डज द पीपल डू जनरली? दे डंप दिस न्यूक्लियर वेस्ट, ओके, इन द ग्राउंड. बट दिस इज नॉट द this is just a temporary method to dump the nuclear waste, okay, but a safer method ये नहीं है. Sometimes if the accident take place, it can be fatal also. अगर एक्सीडेंट होता है तो by chance, तो उसका किस तरह से उसको इस तरह अच्छे से उसको डंप किया जाए न्यूक्लियर वेस्ट को, that is a most probably question, okay, in front of the scientist. Second, an accident in a nuclear power plant can be very fatal. If there is accident take place, so it can be fatal. Person can die also. This is because the accident may result in a release of very harmful radiation, and it releases lots of radiations. So I hope you understood, students. Okay, so that's it in this video. In next video we'll continue, okay, further. Thank you so much.